أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Good morning, everyone. I hope you can hear me loud and clear. Please give me a thumbs up if you can hear me. Perfect. Great. So we have about 15 people on board, which is great. 12 participants, which is great. So we can take a start. I'll also be talking about the course duration because, as you know, this was a 6 months program. We have already completed the taught part and we are going through the practicum part here. Or March, April is going to be. So the April is going to be the last month. So we are almost 4 or 5 weeks left to the completion of this program. But I'm overall happy with the progress that everyone has made. I'm sure you all have learned a lot in this process. Or we are going to have 3 presentations today. One from Mr. Bhola Teli and then from Dr. Indra, and then we are going to present our own. And obviously, for those of you who have not joined any team, you will have the opportunity to join any one of the 3 that are going to be presented today. And I'm also keen to hear from the colleagues who have presented already on how they are doing and what is their progress. So if any one of you wants to talk about their progress, please let us know in the chat so that we can dedicate some time for discussion on your progress and where you are. So without further delays, I'll ask Mr. Bhola Teli. Bhola, are you there? Yes, sir. Good morning. Perfect. We can share your presentation from here, or you want to share your own screen? I would like to share my own. Yeah. Okay, perfect. You can share your own screen. Indra, do you want to say something? You have your hand raised, or is it from the previous one? I am not allowed to share my screen, I think. Sorry, Bhola? The share option is not working for me. Can you open, can you allow Bhola to share? Make a presenter, yes. So Bhola, now you can do that, please. Sure, sir. Is the presentation visible? Yes, it's here now. You can go to the presentation mode, so your screen will be bigger than for us. Yes, that's fine. Perfect. Again, so good morning, everyone. Today I am here to present the systematic review I intended to conduct. It is on mindfulness-based interventions, effectiveness of mindfulness-based intervention to reduce depression, anxiety, or suicidal behavior among adolescents in low and middle income countries.
It is the title of the study, and team are yet to build off, and everyone who are interested in this topic can are really welcome to join. And research questions I refined from the earlier presentations, and the feedbacks I try to include, and these are the refined questions. The first question is, what is the effectiveness of mindfulness-based intervention in reducing depression, anxiety, or suicidal behavior in adolescents? And the target group of adolescent is defined is the 11 to 19 years old in the low and middle income countries. In some studies, it is up to 24 years, but I keep it up to 19 years old. Mm. And the second question is, what type of mindfulness-based interventions? And there are different type of mindfulness-based interventions, which are structured interventions, and these are mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy, and acceptance and commitment therapy. And which RCT study implemented, if implemented all or some of this mindfulness intervention study, it is also will be an studied. And similarly, how these intervention impact in reducing so depression, anxiety, and suicidal will be studied comparatively for this type of MBI. Similarly, our next question says methodological characteristics of RCTs, like study designs. They adopted most of the study adopted parallel study designs of control and intervention. Similarly, sample size they used in case of the clinical setting, the sample size is usually small, but in case of school-based intervention, the size may be higher. Similarly, outcome measures they used to measure the symptoms of depression, anxiety, and suicidal behavior, and which will be studied. And similarly, others also, but here I listed these three. Similarly, the next question is, which is internet to study the challenges and limitations RCT faced. In evaluating the effectiveness of mindfulness-based intervention for adolescent mental health, like the different tools used by different study to measure these symptoms. Similarly, validated tool used or not, cultural sensitivity things will be studied under it. These are the research questions. I forget to mention about the background information of MBIs, which I created here. MBI is a technique which is to which is used to realize the participants about the present moment they are experiencing, and accepting their emotions and acknowledging it, and then feelings remaining present. And it is also scientifically validated validated by neuroscientific evidences, where it said that the prefrontal cortex of the brain is more rational thinking parts of the brains, and it take the actions take actions which is more thoughtful, but the amygdala in the brain, which is more ruminating type of thoughts, which is automated also. Usually the brain functions in default mode networks, and these mode networks keep them persons either in depressions, which is about the past thinking or past things with negative things, and similarly worrying about the futures, but not in present. But the task positive networks, which is operated by the prefrontal cortex, keep the people in present, and it is more fruitful to be present, and which ultimately free from the past thought and future thinking. So this help to being present and help in effective outcomes. So I would like to add this short background information about it here. And now I move to next slide. Here is the PICO criteria of the study. In the population, I have already mentioned adolescent aged 11 to 19 years old. Similarly, intervention, what type of interventions was delivered
and these are mindfulness techniques. There will be different kind of mindfulness like stress reductions, cognitive therapy, mindfulness based cognitive stress reduction, mindfulness based here is B. It is mistakenly typed as. Similarly, acceptance and commitment therapy or some other structured mindfulness techniques designed based on the context and delivered to the participants. These are the intervention groups. Similarly, comparative conditions at no interventions, the control group is provided no intervention or active control or wait-listed control or treatment as usual. And the outcome measures, the study which have the RCTs which assess the symptoms of anxiety, depression, or suicidal behavior as a primary or secondary outcomes will be considered for the study systematic review. Yeah. And here is the inclusion criteria of the study. And the first one is the adolescents. Age 11 to 19 years old in low and middle income countries. Second one is the intervention was delivered among the participants who are either experiencing or at the risk of depression, anxiety, or suicidal behavior. And the third is effectiveness of mindfulness-based intervention. Those who are studying or the core component of the intervention should be mindfulness-based intervention. And delivered in either intervention delivered either in group setting or individual setting or face-to-face, online or hybrid model, all could be eligible to include. And similarly, randomized control trial, both individual or any cluster, will be included for the review. Similarly, the language for the review is chosen as English. English language articles will be included. Exclusion criteria. Exclusion criteria directly opposite to the inclusion criteria means children aged below 11 years or above 19 years will be excluded. And similarly, income countries studies are included. MBI is a minor component or supplementary component, or the study which haven't included MBI will be excluded. And similarly, a study do not measure anxiety, depression, or suicidal behaviors. Although they use MBI, it will be excluded. Similarly, non-RCT studies, studies published in language other than English are also not eligible. Similarly, unpublished study are excluded. And this is the search strategy designed for the searching for the articles, and it result in 2174 studies. I will also like to recheck by the teams. I try to make it more comprehensive. On recheck will confirm it. Similarly, I completed writing portion is already completed, and I have also completed it in the protocols. And similarly, for inclusion exclusion criteria, complete for both presentation and protocol. And searching and selecting study, it is only done for one databases which is PubMed, and for other databases I like to take assistance from the friends who have access to the other database. I would like to request help from them. And if we can do it for other database, it is already in the end, it will be also completed. And checking duplicate will be continue from tomorrow after the sessions and other activities as well. And the tentative dates, which is more hypothetical. I don't know how much it is relevant, but I try to give some dates to the each task of the review. Protocol writing and registrations is said to be completed by the end of March, but I think it will be completed within 1 or 2 more days. It doesn't take much time. And similarly, other tasks, the date time might be reduced. It is hypothetical date, yeah. Similarly, help, we need help in every steps from the teams. And the most important help which I added wild card in is the researching and the selecting study, because I have only access to the PubMed database. So this is crucial, and it will open the way for the next step as well.
Similarly, protocol writing and registrations I will prepare, and feedback check will be done with him. Similarly, other tasks as well. This is the last slide, I think, and I hope. Thank you everyone for. And if there is a questions question suggestion, you are highly welcome, and we must need it. Yeah. Thank you. Thank you so much, Bhola, for a very thorough presentation. Do colleagues have any comments or questions about this? Anyone? You can raise your hand. Okay, so Bhola, you may stop sharing your presentation, and we can now share a review that we have found which is relevant to your topic. Thank you, sir. I stopped it. Okay, so you can see our screen now. Yes, sir. It is visible. So, were you able to find this review, Bhola? So, mindfulness-based stress reduction on depression in adolescents and young adults, systematic. So, it's published in Frontiers in Psychology in June 2018. Yeah, I just yesterday I read it. Sorry, were you able to find it or not? Yeah, I find it, and yesterday I read it thoroughly. I find Okay, it. so how do you think your review? Yeah, so how do you think your review will be different from this one? It is only depressions. It assesses the depressions, and it is not. It is most of the study of this study are based on the US, which are cited. It has used. So my study are more focused on the low and middle income countries. So it is different from that way as well. Similarly, I didn't get much from that perspective, but I read it once, and its coefficient is 0.45. Yeah. Let me just find out from here. So this is a country: Thailand, US, Australia, UK, US, and Korea. Yeah, so most of them are from high income countries. Yeah. And this is all mindfulness based, and they have done this. Okay, great. And were you able to find any other relevant systematic review for related to your topic? Actually, I found one study which have covered a lot of systematic review, which is a systematic review study of systematic review articles, and I actually get surprised getting know that such study also exists, and there are a lot of study of systematic reviews. But still, the adolescent are focused in adolescents and the low and middle income countries. I didn't get any study matching this criteria. And similarly, the current study which we are focusing is the mindfulness-based stress reduction. It is only used one component of MBI, but we are intended to know about the other types of MBI as well, like mindfulness-based cognitive therapy, acceptance and commitment therapy, and other if some structured MBIs. We are also intended to include it in our review, so it is more broader than this, and yeah. Okay, perfect. So it seems like there is work, but there is definitely an opportunity, and you are already following a very thorough approach. So I think the idea is good to go. You can move it to the next steps and develop a detailed protocol that we can review then in the next seminar, or you can send it ahead of the seminar to us and we can review it then. Sure, sir. Perfect. And other colleagues, if anyone wants to join Bhola in this review, please express your interest now or by the end of today's seminar once you have had the opportunity to look at the other seminars topics as well. And I think that will be a great opportunity for everyone. Great. Thank you so much, Bhola. We can now go to Indra. Mute.
Indra. Hello. Hi, Indra. Are you there? Hello. Yeah. Good morning. Perfect. Good morning. Good morning. Thank you so Okay. much for all your efforts. We really appreciate all your hard work and your enthusiasm. And your topic sounds really good. So please go ahead and share your thoughts with us. Over to you. Yeah, definitely. Thank you. Thank you, Dr. Hamdani. Actually, it is presented before also, as you may remember, and now I would like to share after your feedback, share what we did after you provided feedback, and also we found a systematic review which was pretty much related with our proposal. So can you go do you mind to change? So now in terms of team composition, initially Vishnu and I were there. We started, and after our presentation, Dr. Nomaira and Dr. Sumaira both are interested. So now we are starting. We are joining as a team, and as a supervisor reviewer, Dr. Nagendra has promised us to support. So this is how our team look like, and the after we found the study, then we tried to compare what are the differences between our proposal and the what is in the published one. So our in terms of topic and question, research question, we want to study about the school-based preventive, promotive, and treatment mental health intervention for adolescents in South Asia. The published systematic review and meta-analysis was focused on LMIC. Three countries from the South Asia were covered. Would you mind to change the presentation, like slide? No, the next slide. So this is our PICO. So adolescent population and intervention in terms of intervention, prevention, promotion, treatment, and control. Control treatment was treatment as usual, and outcome will be symptom of depression and anxiety, depressive disorder, dissociative disorder, self-harm, and suicide. These are our outcome. So next. So from here, we want to share about the differences. So in that published study, we found that topic was efficacy of school-based intervention for mental health problem in children and adolescents in low and middle country. Our proposal is school-based preventive, promotive, and treatment mental health intervention for adolescent in South Asia. So coverage is like ours is like clearly mentioned preventive, promotive, and treatment, all the intervention, school-based intervention. But what we found is like the existing systematic review has covered only the treatment program. Aim was also a bit different. Identify what school-based intervention have been tested to treat children and adolescents in LMIC and how effective they are. So now our aim is to study about all three interventions, not only the treatment. Coverage LMIC, our is South Asia, so narrow area. So next. So target population in terms of age 6 to 18
covered in the published systematic review. Now our target is 13 to 19, pretty much similar. Any treatment intervention was covered there, but ours is like prevention, promotion, and treatment. So they covered the study, randomized study, non-randomized study, control study. But now here we want to cover experimental studies with primary data and quasi-experimental studies with primary data and non-experimental studies with primary data. So qualitative evaluation, reporting, perception, and experience of service user and providers. So comparison, they compared with characteristics of and procedure for selection comparison groups, matching versus randomization. Now we are thinking about to compare with the treatment as usual. So here we need your support. We need your thought, your feedback to decide about the comparison. Target problem, any mental health problem. Now we are focusing on depression, self-harm, and suicide risk, anxiety, dissociative disorder, which is very common. It seems very common in South Asian context. So we want to see this, especially in the school-going children, especially in the adolescent population. These are the we found some of the literature that it's very common problem. So in terms of language, there was no restriction, but we only want to cover the English language. So these are the major changes, differences that we found from that, the SR, the systematic review. So considering these differences, so up to this point, we are pretty much optimistic to continue this topic. If there is any other critical thought and feedback, definitely we want to have from your side, Dr. Hamdani and team. So I think for saving some time for others too. So this is all presented last time. So I want to stop here, Dr. Hamdani. Okay. From at this point, we tried to finalize the source strategies, and we found finally we found the 160. If we cover for 10 years, there was 166 in possible included the studies that you can see here in the topic in the presentation also. Yeah. Sure. Thank you. Thank you, Indra. I'm just going through your next slides. Okay, perfect. Here you are. I'll just come in with the comments from the beginning. So This is great, your comparison and what is already there. And then you have identified an age range of 13 to 19. So definitely your peer reviewers will query this. What is the reason for 13 to 19? So you need to have a rationale of what age range you are selecting and why you are selecting it. So maybe in the next stage, you can update it accordingly. Okay. And provide a rationale for why 13 to 19. Why exclude 12, 11, 10, 9? Because that does starts with pre-adolescence, early adolescence, late adolescence. और उसको ट्रिप पे लगा देते हैं या आईवी लगा देते हैं लेसिक इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डाययूरेटिक वो एकदम से किडनी को स्टिमुलेट करता है एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है जब एक्स्ट्रा वाटर निकलता है तो लंग से भी पूरी बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है ये कम से कम इतना निकल जाता है Okay, so I think Dr. Rabia जो है वो लेसिक्स पढ़ा रही हैं. So sorry for the interruption. Indra, coming back to your topic, adolescence is important.
the age range you select, and you need to have a rationale for it. So you can look up to the WHO or UNICEF criteria, and then see what age range you want to include and why you want to include it. This would be important. Any reviewer will first ask you this question. Okay. Intervention is fine. Then studies is also fine. Comparison, I would say, if you should include all type of comparison studies rather than just treatment as usual, because it will restrict your studies if you just go with treatment as usual. And you will also see that the way people describe treatment as usual is quite vague. So you will struggle Okay. with that. So I'll suggest you just write here all type of comparison in the arms will be included in the study. Okay. Thank you. And then Got also it. in terms of target problems, I would say go with any mental health problem rather than just depression, self-harm, suicide, or anxiety. So at least to begin with, when you're designing your search strategy, go with all types of mental health problems. Okay. Yeah. And then language Got it. English is fine. And then based on that, you can update your inclusion and exclusion criteria. And that is fine. And this all looks fine. So I think overall your topic looks good to me, and this all makes sense. And congratulations on having 2 more team members from this group, which is great for us. So to Yeah, see it's these great collaborations actually. developing. Yeah, Yeah. Yeah, we are so happy and excited to work together actually. amazing. So again, in terms of your PICO, you will update adolescents, you will put down the age and the rationale. Yeah. Prevention, promotion, treatment is fine. Control, you will type all types of control outcomes, all type of mental health outcomes will be included here. Yeah. Yeah. Got it. I noted. Great. Any questions that you have or anyone else has? Yeah, so now Check. we are preparing for the protocols, like registering protocol. Actually, we were waiting your suggestions here. We wanted to present once before registration. So if we need your help, then definitely we will come to you. We'll write email Sure, to you. sure, we Thank can you, do Dr. that. Hamdani. We can do that. Does anyone has any questions? Anyone in the group? Perfect, great. So it sounds like we are doing very good with the time. Now, which brings us to our own topic of systematic review, which is about stepped care interventions for reducing internalizing symptoms in adolescents. And this is a review that we as a mental health group are going to undertake. And as you know that some of you had expressed interest, so listen to it carefully, and we can then talk about who's going to join us in the team. And just to give you the context about why we chose this topic. So we have been active in this area of child and adolescent mental health for quite some time. This is my area of interest. We have done epidemiological studies, we have done contextual analysis, we have done qualitative studies, we have done literature reviews on life skills intervention, relaxation techniques, family support, and then we have done trials of the intervention in collaboration with WHO and UNICEF. And the key thing that we have identified is that it is not just one intervention that can cater for the need of adolescents, but it needs to be a stepped care intervention program. And that is in the process what we are setting up now. So we thought it would be a good idea to do a systematic review of literature on what are the effectiveness of stepped care interventions for child and adolescent mental health. So this is why we are going ahead with this topic. So this is the core team that I've got. And then obviously, we would love to hear from you who is interested to join us. And then obviously, we are going to allocate the tasks accordingly to the team members. We all know that internalizing symptoms include symptoms of anxiety and depression. And because they are a spectrum, so they include a whole spectrum of disorders included in this category. And we know that there are psychological treatments, there are psychosocial interventions, and then there are pharmacological interventions for treatment of child and adolescent mental health problems. And then there are combination of therapies.
But as clinicians, as academics, we all know that we don't know much about the effectiveness of and how they are being practiced and what is the effectiveness of such programs. Now, this is a slide from the UK NICE guidelines on stepped care intervention for depression, just to help you understand that they say that if someone has mild symptoms of depression, they need to be treated by the primary care physicians. And this is more about psychoeducation, support, and referral. Similarly, if someone has mild to moderate symptoms of depression, again, these are the patients whose maybe mild symptoms are going to persist for a longer period of time, so much so that they are going to impact their functioning, or they are getting more severe in their severity now. Now, they can again be managed in the primary care with the help of CBT-based psychotherapeutic interventions, some psychoeducation, some self-help interventions, physical activity. We can recommend medications there as well, but mild to moderate depression can be managed with psychotherapy and psychosocial interventions. And then obviously, if someone still does not respond to this level of intervention and they escalate to moderate or severe depression, in addition to the above interventions, we can add medication. We can look for any comorbid conditions and treat them. And then we can start to develop a liaison with a psychiatrist and start care of the patient in collaboration with the psychiatrist, the primary care physician, and the family and the patient. And obviously, then there is a severe cases which are managed by the psychiatrist in collaboration with psychologists, the primary care physician, and then the modalities of intervention are also more intense. Now, as you can all imagine, that we have actually never observed that this is how things are being practiced. And that is the need to develop such a program for child and adolescent mental health. But we also want to learn from any programs that have been developed and implemented and see how they are working. Now, we were able to find three similar systematic reviews and meta-analysis which have found in the countries are effective with an effect size of 0.3 to 0.4, median effect size of 0.4, which is the effect size, and then odds ratio of 3 or for response and 1 for recovery. And then similarly, Rivero Satana et al. In 2021 did a meta-analysis including 18 studies where they observed symptom reduction, and there was a moderate to strong response and remission, 2 in response and remission. Now, as you can see that there are studies that have focused on reviewing the effectiveness of such intervention programs, but they have all reported heterogeneity and they have found limited, and then obviously there are high risk of bias studies. Most importantly, they have only focused on adults. So we didn't found a systematic review on the effectiveness of stepped care interventions for child and adolescent mental health or in the mix. So that is what really we want to see, what is the effectiveness of the stepped care intervention programs for anxiety, depression in adolescents. And we have put down an age range which is more consistent with the UNICEF and WHO age range guidelines. And then obviously, what are the interventions that are implemented, how they are implemented, what have they used as a framework, what interventions are included in them, what are the settings, what are the target population, what are the delivery formats, and how effective they are. So adolescents are going to be our population, which are going to exhibit prodrome or clinical symptoms of anxiety, depression, psychosis, or anything. And then we are going to look at the stepped or sequential interventions, which mean at least they need to receive 2 interventions, first a low intensity one and then a stepped up care. And it could be psychotherapy, it could be psychotherapy plus pharmacotherapy, it could be psychoeducation plus psychotherapy. We can include all of those things. And we're going to include all types of comparators such as waitlist control, complementary, alternative medicine, pharmacological, psychological. So we're not going to exclude any types of controls. And we're going to see the clinical reduction in symptoms of anxiety, depression, distress. And I would say we should also go for psychosis and other conditions as well. And obviously, secondary outcomes will include responders, remitters, relapse, quality of life, suicidal ideation, hospitalization, OPT visits, medication prescription, and we are going to include RCTs and non-RCTs. So both we are going to include. This is a draft search strategy we have put together, and this is where we are. And what we anticipate is that by the next seminar,
we would have completed our protocol and checked for duplicates in the end note and imported all the studies. And then in the following seminar, you should have completed our title and abstract screening, extracted data, and completed a first draft report. So May 3rd is going to be our last seminar with you all for this group. So we anticipate that by that time, we should have completed this one systematic review with you all who are going to be part of us. And we expect if you all can also look at your timelines and do as much as you can, that will be the best part. These are the people who have expressed their interest in joining us, but I'll look forward to hear from you all. And ideally, I would want to talk to you or discuss with you your interest and see how you can contribute. One thing that is very important is, and this is not for this review, but all of the reviews where you are going to collaborate, and we are going to be talking to all of this content for you to understand that we very strongly discourage gift authorships. So if I become aware of any such thing that you are just including people for the sake of pleasing them, or we are all in a learning curve, no one is a senior and no one is a junior. Everyone needs to earn their contribution. So there could be two different types. One is you are joining a group for the sake of just completing the requirement for this course and getting a certificate, which is fine. You can join a group and contribute to that group and complete your requirement, and that is all what we need. But if you want to be included in the publication, I would strongly encourage all the lead authors and group leads to make sure that everyone you include in your group is actually adhering to the ICGMA guidelines for contribution as authors. And please don't hesitate to communicate it to your team. Ideally, I would want that you should all do this first orientation with your team and make sure that everybody understands what qualifies for authorship. It very much happens that people become part of the group and their natural expectation is that I'll become an author. So to be listed as author, you need to make substantial contributions to the work. Please make note of it. And this is something that there are then some unpleasant instances where people say that I was part of the group, I was contributing. No one said that I'm not contributing that much. What is substantial? I did it substantially. So I would want everything to be done formally. Ideally, you should be communicating to each other formally over emails and document who is contributing what and make expectations very clear. If someone wants to contribute to a paper, make it clear what they are going to contribute and what is going to make them eligible for authorship. Please, 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 I cannot overemphasize it because I don't want the partnerships to be spoiled because of unrealistic expectations, confused communications, lack of transparency in communications. If a group lead is inviting someone, they need to be clear on what they expect from someone to become part of the authorship team. So please be very clear about this. So and the responsibility obviously lies with the lead person, and they need to be clear in their communication on what they expect from the team members. Okay. So the last thing that I have on this slide, the research team will not be automatically included in the list of authors. So individual team members may qualify based on substantial contributions to research and manuscript preparation. So please make a note of it. One thing is completing the requirements for this course, and the other thing is actually contributing to the manuscript and taking it to the publication stage. Now, as I've just discussed with you, that as a requirement to complete your course certification, you are required to submit the synopsis of your topic by 30th April 2025, which would be in the form of a brief protocol. So you already have the protocol template, but I'll ask my team to share that with you again. And please share it by info@ghd.stmu.edu.pk, which means that all of you might not complete a systematic review as part of this course. Some of you might, but all of you need to submit a synopsis to complete this. Now, this synopsis could be a group assignment or an individual assignment. So if a synopsis has
say 4, 5, 6, 7, 8 people who are listed there, then that means that your requirement is complete for that, and you will complete the requirement for this course, and we'll send your case to the university, and that will be done. We are also going to have a end of the assignment MCQ exam, which is going to happen on 3rd of May on the last seminar. And that is again a university requirement to complete the qualification. It is going to be based on the slides that we have already shared with you in the taught part of the program. So this is going to be just an online exam. You're going to just complete it in like 30 minutes or so, and that will be done. So your synopsis and your end exam are the two things that we require for your university certification. Now, you might think of, okay, this is too quick. You didn't anticipate that this is going to end now, and you really want to stay connected and continue with this. We are going to enroll the next cohort, and we need your help now to spread the word out. So this is the registration link. We are going to share it in your WhatsApp groups. Please share it in your circles. Please put in your recommendations as well for those who have done it. I'll ask my team to reach out to some of you are willing to share your testimonials, which could be in the form of some brief write-ups of how you think this program has helped you, or a brief video message about why others could join this program and how they would benefit. So we would really appreciate your support. Now that we start a second cohort in the month of May, you can continue to join us there, which means that because you've already completed a stage of the program, your program will become very helpful for the new inductees or the course participants, and they could then say how you are progressing, and you are going to be networked to the next group as well. So that is all. And last but not the least, because we are not going to meet before Eid now, so we wanted to wish you ask a question? Happy. Yes, Sir, please can go I ask ahead. a question? Yes, please go ahead. Sir, the search strategy, can you show that slide? Actually, I didn't get it, please. Sorry, say that. Sir, the search strategy slide, the one in which the search strategy was displayed. Can you please re-show that slide? This is only from PubMed? It's a draft one. It's just a first draft. We are going to update it as well, but this is just to show you how we are going to progress with it. Okay, thank you. Now, this is going to change because there are going to be many iterations we do as we play with it. Great. Any questions, comments, thoughts, feedback? पहले तो मुझे ये बताएं, आप में से कौन हमें कोई अपने टेस्टिमोनियल्स या वो लिख के देगा या विलिंग है शेयर करने के लिए, जिसको हम सर्कुलेट कर सकते हैं as part of the experience from the first cohort. You can raise your hand so that we can know and our team can reach out to you then. It could be a brief write-up. It could be a short video that you can record for us. Great. Thank you, Bhola. Thank you, Indra. Dr. Saima, thank you. Perfect. Dr. Samin, thank you. Perfect. Great. So in terms of the action items, we also want to hear from the colleagues who have presented previously, but we want to know how is their progress and how they are anticipating. So please reach out to us before the next seminar, and we would love to hear from you on how you are progressing with your systematic reviews and how do you anticipate it going ahead. And then also you can let us know who wants to join our team for this systematic review, and we can definitely take you on board and make sure that when we plan next steps, we take you board with us.
Great. Any other thing? So I think I've completed all of the agenda that I had for today. If any one of you wants to share any thoughts, feedback, comments, anything, I'm more than happy to respond. Great, Dr. Alina. You want to discuss now? Assalamu alaikum, sir. If it's possible, yes, sir, I would like to discuss. Ji, please go ahead. Up till now, I presented initially, I discussed my topic. I haven't done it again. But since then, I've modified my search strategy and I am ongoing with the protocol writing as well. I'm struggling with the different search platforms. We've gotten access by the university, but I'm struggling with that. I'm able to do the search strategy on the PubMed, and I think so it's yielding 71 results, and they all seem fine according to my topic. But with the Google Scholar, I'm getting a lot of results up till 11,000, and with the other search strategy, with the other search platforms, such as Wiley's and Taylor Francis, I'm able to run the search strategy, but I don't know how to export it to the end note. So I'm struggling with that, sir. So if you can please comment on that. Sure. Yes, actually, I was able to talk to Professor Amir, and he was kind enough that he activated everyone, librarian and others, to make sure that we all have the access and we are able to access them. What I was thinking was we are planning our next seminar on 12th. Yes. So what I'm going to do is I'm going to take a librarian on board, and we are going to maybe work with the librarian to make sure that we are able to demonstrate it, how they are able to demonstrate to everyone how we can access these databases and download these papers. I think that's a key bottleneck at the moment that we need to address. Yes, yes, struggling with that. That would be very helpful. Yes, sir. So I think that is what we'll do. I'll write an email to Professor Amir, and I'll request that he kindly schedule us a session with the librarian, and they demonstrate it to us, and then we can take it from there. Okay, sir. So another question, the protocol registration, it has to happen before we go into the full text screening, or it can be done after that too? I think once you are satisfied that your search strategy is working, your research question is quite streamlined, you are quite satisfied that there are no unexpected things that might happen, you can then proceed with the protocol registration. Because once you register a protocol, then you have to provide a very strong rationale of why you are changing anything in the registered protocol. And when you are going to publish your protocol, if people realize that you were not well prepared, you had not thought through your question, it gives a very bad impression. And protocol is the first thing that any reviewer looks at. So if they find out that what you had registered in the protocol is different from what you have done, then they'll ask you for the rationale. And if the rationale is that you just did it because you had not anticipated that this would come out, that's a very kind of not a very professional way of approaching it, and that then severely restricts your chances of getting it published in a good journal. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Great, perfect. So I think we've completed our agenda in 1 hour, which is great. I think I'm very happy with the progress. Last thing, maybe I can ask the Excel sheet. Can you project that there? Because I had noted that some of our colleagues have not made any progress, and I never heard from them on the call as well. So I just wanted to check on them if any one of them are online and see how they are doing. Please don't feel shy. ऐसा ना महसूस करें कि कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा काम कर लिया है और आप लोग पीछे रह गए हैं, तो बहुत बुरी बात है. मतलब बुरी बात है, लेकिन बहुत बुरी बात नहीं है, थोड़ी बुरी बात है. अगर आप अभी भी खामोश रहते हैं और नहीं, वो बहुत बुरी बात है. So I can see that there are
some people who we have not heard from for quite some time. I won't name anyone, but you can look at your sheets and see that there are people who have not been very active. So please make use of this opportunity. You have got 6 weeks, almost 5-6 weeks now. And I think there have been so many lectures and case presentations that have been done, so that should really help you with this. This is my kind of last thing that I wanted to say. Okay, please don't feel shy. Make use of this opportunity. Great. Chale, thank you so much, and have a very blessed Eid, and we'll connect with you inshallah on the next seminar. Okay, take care. Seminar would be 12th of April, not 5th of April. That would be too close to Eid, so we thought के बहुत सारे लोग अभी ईद मोड पे होंगे 5वीं पे. ठीक है, 12th April then inshallah. जी बिल्कुल ठीक. Thank you, thank you.
ब्रेकफास्ट किए सुबह आते ही जो आपसे बड़ी बैग लेके आए पिटाई होगी तो मेरी नाश्ता नहीं कर रहा हूँ चिकन खा रहा है मेरे बाबू में आपके साथ बैठे खा रहे अभी उनकी माँ भी कह रहे हैं गाँव में कल वो कुरकुरे खाना ना तो उनके खुशियाँ नहीं है तो रोता आया तो आते मुझे गले लगाया मैंने कहा खुशी और तो मुझे कोई खुशी नहीं है खुशी की जिंदगी में पहले तो मुझे हक की तो शिकायतें लगा रहे कि मामा ने मेरे से ले लिया मैंने कहा वो आप खा रही है ना खाना तो इसलिए हमको गुस्सा आ रहा है तो मुझे कहते कि अभी आप छुपा रहे हैं जाते जीपीएस वाले उसमें एक चीज जो फर्क हुई है ये हुई है कि हमने जो बीएटी को नंबर कहा था ना स्क्रीनिंग का अब देखिए जो में डाटा दे रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन पॉजिटिव रेट हो जाता है तो एक्चुअली जो हमें दे रहे हैं वो जनरली सारों को स्क्रीन नहीं कर रहे हैं किसी को करे जिनको तो लगता है कि है तो हमने उनको जो नंबर दिया वो 40 लेके आया जितने भी आने सबको लेके आए लेकिन हम उन्हें बता सकते हैं कि प्रैक्टिकली लगे वो देख तो अपने रहे हैं लेकिन सारों को स्क्रीन करना जीपीएस के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो अब ये जो कहता है हमने उसमें से कितने कहा कि पॉसिबल होंगे हमें कहते कि हमारे पास तकरीबन 20% 15 से 20% तो कितने होंगे 4 बार तो हम उन्हें कह सकते हैं ना कि जो स्क्रीनिंग का डाटा है ना वो 4000 वाला ये वाला डाटा है हम इतना नंबर तक पहुँचेंगे तो होना चाहिए 6 महीनों के अंदर हाँ 6 महीनों के अंदर होना चाहिए तो अगर हम उधर तक पहुँच जाए ना और हम वो वाला डाटा है जैसे 10,000 वाला वो हम कहेंगे ये बेस्ड ऑन देयर प्रैक्टिस है और ये हमने लोगों से खुद पूछा है कि आप महीने में कितने यूज लेते हैं जिले जो हमारे पास पिछले कोहॉर्ट का डाटा आया था उसमें हमने इनको सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन वाले केसेस का दिया था पीएचपी और आयरन गैस क्योंकि हमारे पास बाकी भी थे ना साइक्लॉप्स और वो मिला के 10,000 नहीं थे वो मिला के 10,000 नहीं थे 10,000 2 20,000 अच्छा 20,000 टोटल है 20,000 टोटल लेकिन हम ये कर सकते हैं ना कि इनको कहें कि हमने जीपी से पूछा कि उनकी मंथली एवरेज प्रैक्टिस कितनी है और उस लिहाज से हम उनको कह रहे हैं कि 10,000 तो नीचे होगा क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है और फिर ये वाला जो डाटा है जो स्क्रीन पॉजिटिव वाला आ रहा है ये हमें एग्जैक्ट कितना नंबर कह रहे हैं अभी 4,000 में मिलता है 4,000 तो मतलब हम इस तक अगर पहुंच जाए 6 महीनों को तो मेरे ख्याल है कि फिर हमारी जांच कीजिए और हम ये कर रहे होंगे कि इनकी जो रिपोर्ट बनानी होगी ना वो हम जहाँ जहाँ ये लोग अपने अटैक से आता है डॉग से वो होता है वीडियो फाइल अटैच करके ठीक हो गया हाँ वो हो गया मैं बस ये देख रहा था कि ये स्टार्ट हुआ कैसे है कोई कैमियो के नाम से कोई आपने कोई लाइव रिव्यू या कुछ ऐसे कोई स्लाइड के अंदर कुछ ऐसी चीज होगी अच्छा कोई वीडियो जिस तरह होती है ना कोई फीचर है ये तो एक्टिवेट कर देता है उसको नहीं वो टीम्स के लिए रह गया वो पावर पॉइंट क्विट किया ना तो वो बंद हो गया तो उसमें हम प्लान कर लेते हैं कि अगर ये जो अपना ये वाला डाटा दे रहे हैं तो ये वो डाटा है जो कि सेकंड स्टेज डाटा है हमें सिर्फ ये करना है कि इस दौरान ना आशिफ साहब जिनकी जो डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस के एरियाज हैं जो अस्पताल के नाम शाम आ रहे हैं वो एक डेटाबेस बना लें तो ये डॉक्टर है ये इसके अस्पताल का नाम है ये इसका सिटी है और ये यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है
और वहाँ पे इसका एवरेज महीने का वो इतना है, तो इसने इस दौरान में इतने मरीज डिस्कवर किए और इसने इतने केसेस हमें सबमिट कर दिए, तो इसलिए हम डेटा जमा कर डेटा पूरा कर पाएंगे। तो जो हॉस्पिटल वाला वो हम जो लोकेशन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से, मतलब वो रेसिडेंट के प्रिस्क्रिप्शन में भी नाम शाम लिखा होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि हमारे पास डिनोमिनेटर होना कि इनके पास लोग आते हैं कि जिसमें से उन्होंने इतने आइडेंटिफाई किया है, अंदाजा नहीं होता। हाँ वही ना, मतलब इस तरह से। ये मैं सोच रहा था कि अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा, आगे मिस्टेक है कि हम अपना ज़रूर नंबर तक जाए, लेकिन इस तरह से हम उनको पूरी रिपोर्ट बना के दे देंगे कि डॉक्टर ये, इसका सिटी ये, इसकी प्रैक्टिस की साइट ये, एवरेज इसने जो पेशेंट्स देखे ओवरऑल इस जमाने में इतने डाटा सबमिट किया, जो स्क्रीन पॉजिटिव का वो इतना, और ये फिर हमको पूरा डेटाबेस बना के हम दे दें कि ये है सारी कहानी, और वो हमारे बॉडी के से सारा बैकअप डेटा निकाला। एक क्वेश्चन है जो नहीं है, ये कह रही कि एक टीम मेंबर एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी नहीं हो रहा है दो हो गए, one participant to join one team. Well, they can join, but they should be able to meaningfully contribute. और सारा क्या वजह कि उनकी सांस से तबीयत खराब है, तो वो एडमिटेड हो उसका मौसम भी वही साथ है, तो उन्होंने एक्चुअली रिपोर्ट अक्सर डिस्कस की थी, तो सर को कहा कि हम लेके जाए एडमिट करा कि कुछ किडनी का इशू है, किडनी का इन्फेक्शन। हाँ, तो वो जो अरसान की वाइफ है ना, वो उनके पास चली गई है। अच्छा, तो ये भी अभी बच्चे की बेबी सिटिंग का है। अच्छा, क्योंकि मैं जो कपड़े सीखी थी, मैं सोच रही थी कि दोनों की तो वाइफ वो मदर इन लॉ माशाल्लाह कॉमन है, तो उनकी वाइफ गई है वैसे वो, हाँ, तो ये कहती थी वो बेटी को करना है, मुझे भी होगा इसमें केसेस चल रहे हैं किडनी के रिपीटेड इन्फेक्शंस भी हैं, और उनके ना बड़े बड़े बेहोश हो जाती हैं, सीवियर वेट लॉस भी है, तो मैंने कहा था कि आप जरा थोड़ा इसका प्रॉपर वर्कअप करें। हाँ, मतलब कॉज ऑफ सडन वेट लॉस पता ही नहीं है ना कि किसी को इतना ज़्यादा हो रहा है। तो किडनी का क्या बता रहे हैं? किडनी का ये कि इनका स्टोन भी है, और वो पाइलोनेफ्राइटिस यानी बैक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यूरिन पीछे की तरफ जा रहा है ना स्टोन की वजह से, तो रिपीटेड किडनी इन्फेक्शंस है इनको ना, यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन है, फीवर इस तरह की चीज़ें ना, तो ये इन्फेक्शन चल रहा है।
हमारे पास जो स्क्रीनिंग का डेटा है डॉक्टर वो 10,000 का होना चाहिए। अच्छा ठीक है। और साल मतलब पूरा 6 महीने तक का ना मतलब 10,000 का हो सिर्फ इसी टाइम पीरियड का। ठीक है। और जो हमारे पास आ रहा है ना फॉलो अप का डेटा जी वो तकरीबन हमारे पास होना चाहिए people accessing mental resources वो 1400 होना चाहिए हमारे पास। अच्छा ठीक है सही। और उनमें से तकरीबन 500 हो ऐसे जिसको रेफरल का मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन हो ठीक है। और उसमें ये है कि इसमें हमने दो लिखा है कि एक जो रिसीव करनी है जीपी से के और दूसरे दिन में चेंज नजर आ रहा है ठीक है। रिसीव के नॉर्मल क्या वो चेंज करेगी ना तो इसमें और वो चेंज वही लोग होंगे जो फॉलो भी करा रहे होंगे फॉलो कराएंगे तो चेंज भी आएगा। हाँ ऐसे ही आपने पावर बीआई का नाम सुना ना? ये होता है अभी ये जो हमारा ओडीके का जो जहाँ फॉर्म सबमिट हो रहे हैं ना वो डेटा सोर्स के तौर पे यहाँ लाइव कनेक्टेड है। अच्छा तो ये जो रिफ्रेश का बटन जब हम दबाएंगे ना तो ये मतलब लाइव जो वहाँ डेटा आ रहा है वो यहाँ पे आता जाएगा। तो ये अभी मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ इसको। तो मेरी अभी मुझे एक सक्सेस हुई है कि मतलब डेटा मैंने यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं हम लाइव। तो अगर ये ऐसे हो जाए तो काफ़ी सारी एफर्ट हमारी जो है ना बच सकती है और हम अगर लाइव डेटा देख सकते हैं ऐसे प्रेजेंटेड। 476 केसेस हो गए हमारे ना डॉक्टर तैयब ने 10 महीने के 23 पूरे कर लिए और डॉक्टर सिंधु ने भी वो नाइट ऑन कॉल थी लेकिन उन्होंने भी रखी इसके लिए मैसेज है कि मैं आज नहीं कर सकती कि मैं नाइट ऑन कॉल थी। तो ये 11,000 का नंबर है ठीक है। अच्छा ये बेसलाइन हाँ बेसलाइन का है और ये है कि उनमें से तकरीबन 6,500 रुपए फॉलो किए वो रिसीव कर रहे हो मतलब वो हमारे पास आए हैं बट एटलीस्ट हम इन्हें एस्टिमेट किए कि आधे बंदे रिसीव कर रहे होंगे कि और फॉलो का डेटा बस 4,520 का होना चाहिए। तो ये मैं साइड में ये ठीक है। अगर हमारा ये टारगेट हो कि तकरीबन हमारे पास जुलाई तक 11,000 का डेटा आना चाहिए तो वो आप यहीं पे अपने पास अगर देख लें ताकि उसकी कंपैरिजन ये भी हम देख रहे हैं कि हम उस टारगेट को मीट कर पा रहे हैं। हाँ, कितना रह गया फॉलो अप का डेटा हमें 4,000 का चाहिए तो वो हम देखते हैं कि फॉलो अप का डेटा कितना हमारा टारगेट अचीव हो रहा है क्योंकि बार बार नंबर को घुमाना बढ़ाना कितने हो रहे हैं एटलीस्ट आपके पास ये लॉक हो जाए। कौन से मंथ तक? जुलाई 11,000। हाँ मैं आपको स्टाइल भेज दूँ स्क्रीनिंग का जो डेटा है वो टिक में है और जो आपके पास है फॉलो का डेटा वो स्टार में लगा है।
Expected number is 11,000 by the end of July 2025. तो जो for big time data, one time data, and for follow up it is around 4,000. जिले को रमजान इस साइड मुझे मिलती नहीं वैसे भी आज को फॉलोअप्स भी जुलाई के एंड पे ही अगर सिस्टमैटिक रिव्यू वाली है इसकी रजिस्ट्रेशन भी मैंने अलग से साइट पे आके तो दोनों साइट पे यूनिवर्सिटीज अब हमारे पास 134 का नंबर है जी और डॉक्टर कितना आ गया बयासी बयासी को 82 पर मंथ में जमा कराना है पर डॉक्टर है मतलब ईवाई की अगर 11,000 है तो अगर पर डॉक्टर भी करे तो वो 82 है व्हिच इज वेरी लेस अगर किसी को ज्यादा लगे तो भी हमारे पास है मार्जिन मतलब हमने तो 90 का ही कहा है हां वही 80 पे हमने खूब कहा है ठीक कहा है
Y3 का क्या मतलब है? ये थ्री हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, सही। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, अभी बाहर मुझे नजर नहीं आया था। ठीक है, आपने मोबाइल कराना था, भेजना था, वो साजिद भाई का फोन था अभी। वो कह रहे थे कि अगर आपने भिजवाना है तो अभी भिजवाना है या हाँ मुझे जा सकता है। एक मैं वो ऐप्स में कर तो वो कह रहे थे कि अगर अभी आपने भिजवाना है तो फिर वो भी उन्होंने वो वहाँ पे बात की हुई है ब्लू एरिया में, तो वो मुझे था कि वो अरसलान नहीं है ना, तो शायद वो उन्होंने इस्लाम में काफी चाहिए एक मेरा ऐप्स सही है, सही है। मुझे नंबर अभी पूरी तरह समझ नहीं आया है कि ये ईयर 3 का क्या मतलब है। इसको छोड़ के आपको कोई नंबर मेरे मैंने खाली इसको मतलब आपने मुझे दो नंबर बताया ना, एक 4000 एक 11000। 11,000 ये कि वन टाइम डेटा होना चाहिए बेस लाइन असेसमेंट। मतलब 134 GB से हमें वन टाइम का डेटा 11,000 आना चाहिए और उसमें से 4,000 का ऐसा डेटा जो हमें दो दफा आना चाहिए, फॉलो डेटा हमें पर हमारे पास होना चाहिए, यानी 134 GB एटलीस्ट 4,000 डेटा हमें जमा करें फॉलो सही। नहीं मैं वो उसको देख रहा, मुझे पूरी तरह से उसकी समझ नहीं आ रही थी। उसमें वो ईयर 3 लिखा है ना, तो मैंने कहा शायद वो हमारी प्रोजेक्ट वो है, प्रोजेक्ट का ईयर 3 है, ठीक है, उसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं। सही। फर्स्ट मंथ में फॉलोअप्स का तो कोई नंबर नहीं है ना? आए हैं तुमने मुझे भेजे ना कल। हाँ नहीं, वैसे के टारगेट तो कोई नहीं है ना फर्स्ट मंथ। अच्छा ये भी है कि हमने उनको फॉलो अप के लिए कितने गए थे कि जिसमें एटलीस्ट 45 नहीं चेंजेस तो 30 फॉलो अप का हमने उनको इस तरह नहीं बताया था 45 था। हाँ 45 का मेंशन नहीं है और 30 का चेंज उन्होंने हमें फॉर्म में देना है 30 का ये मतलब ये हो गया इसको देना मैं फिर ये पता कर लेता हूँ क्या।
आज मेरी आंखें नहीं खुली इसलिए से नहीं आज आप समझ सकते मैंने कैसे रोजा बनानों के टाइम खुली और फिर उससे मैंने और शेख दोनों नियत की है। नहीं अच्छा मैं कल अफ्तारी के वाले घर मेरे बेटे की बहन को बताया था परसों सालगिरह थी तो उसकी हमने फिर कल सेलिब्रेट इसके बाद हमने कहा जब अफ्तारी कर लेते हैं तो जुम्मे दिन इसलिए बेहतर है कि दिन चले रहे तो वो सारे लोग बैठे थे तो 10:30-11 बजे कर गए ना तो चीज़ें समेटते मुझे देर हो गई और मैंने घर में भी 1:45 बजे सोई मैं कहा उठती हूँ घंटे बाद ना 1:30-1:45 सफाई चीज़ें बच्चे भी जागते रहते थे छुट्टी की आधी उसे सिमटवाई आधी खुद मेरी ना अजान के टाइम आँख खुली है तो मैंने कहा शेर अजान हो रही है। हाँ ऐसे ही था। नहीं मैं मुझे भी आजकल ना एक तो वैसे मुझे नींद थोड़ी ज़्यादा मैं मतलब थोड़ी देर से जाती हूँ मैं भी थोड़ी ज़्यादा अलार्म लगाए ऐसा लगे मतलब सब ही जाएगा खाली मेरे और टाइम पीछे आ रहा है ना आपका 4:45 बजे काम है हाँ मतलब मेरी ना फिक्स टाइम 3:40 बजे से मैंने शुरू किया था अब तो पीछे करना चाहिए ना हाँ तो पीछे में नहीं खुलती है पीछे नहीं खुल रही है मैं स्टार्ट के रोज बड़े मजे से 2:30 बजे उठ रही थी अब मेरा 3:30 बजे हो गया मुझसे नहीं उठा जाता ऐसे ही है मैं तो ऐसे बस ना अलार्म बंद करके सो रही हूँ और तीनों में बंद करके सो रही हूँ ये मैंने 3 दिन से वही काम कर रही हूँ तो मैंने अभी से क्या भी चारों का अलार्म लगाया वरना सबका रोजा रहेगा वो आगे मेरा नहीं मतलब मुझे नहीं प्रॉब्लम हो रही है वैसे यार ये उधर काफी उससे वजह से मैं शुक्र यहाँ आ गई मैं घर में तो मेरे वक्त निकलता रहता है कि मैं उठे नहीं ऐसा हाँ तो मैं उनका भी काम भी लगा के हाँ कुछ खाए बना दिए ऑर्डर ट्राई करने थी मतलब कर जाता है रोजा तो ये आप स्क्रीन अच्छा मैं ये जैसे साइड से फोन देते हैं वहाँ पे लेके जाता हूँ उनसे पूछता हूँ कि जो भी टाइम वहाँ होगा साई साहब से खड़े होकर करवाइएगा ठीक है सामने होगा साई साहब से बात हुई है आपकी मुझे पूछना है कि कौन खड़ा होगा साथ जब वो स्क्रीन चेंज कर रहे होते हैं तो हाँ हमको फोन देके आ जाते हैं वो उनके से कम करवाते हैं चलिए आप अपने साई साहब से कांटेक्ट करें साई साहब से बात कर लेना वो जैसा कुछ आपको बताते हैं उसने ऐप फाइल कर दी जैसे हाँ ये हर चीज जो है ना चाहे वो कुछ भी है उनको ये चाहिए होता है वो कहते हैं कि स्क्रीन देखना चाह रहे होते हैं अदरवाइज पावर ऑफ करके भी देख सकते हैं लेकिन वो देखते नहीं कि लगी कैसी है स्क्रीन सही ऑन करके उनको देना है वैसे आपको टाइम की कंस्ट्रेंट्स हैं वरना इसका वैसे जो होता है ना वो यूं होता है कि वो स्क्रीन लगाते हैं मतलब जो होलसेल डीलर होते हैं ना जहाँ से मिलते हैं पैनल ये तो प्रॉपर एक काम करके देते हैं ना तो वैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है ये है कि वो आपको स्क्रीन लगा के यहाँ पे सामने रख देते हैं ऐसे मोबाइल खुला हुआ स्क्रीन इधर है मोबाइल इधर है तो आप स्क्रीन अपनी चलाते हैं यूज़ करते हैं सेटिस्फाई हो जाते हैं वो कहते हैं बस ठीक है डन है मतलब आपने चेक कर लिया आप सेटिस्फाइड हैं अगर आप कहते हैं नहीं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वो दूसरी निकाल के लगा के आपको फिर देंगे चेक कर लो तो वो यूँ होता है और फिर उसके बाद आपको पिछले साल मैंने करवाई थी नहीं वैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं कि वो जो होलसेल मार्केट होती है ना वहाँ पे ऐसे करते हैं तो ये भी जो करने वाले होते हैं ना ये भी होलसेल मार्केट से जो पैनल आते हैं ऐसे चेक करते हैं हम वो स्लाइड्स में सेंड करेंगे जो कंसल्टेशन में दिखा रहे थे ये वो हमारे लिए ये थी जो डेटा वाली स्लाइड्स
हर्षित को प्रेजेंट कर 100% करनी है वो लेटेस्ट हमारे पास डाटा नहीं है वही डाटा है हमारे पास मतलब जो कल वो तो कोई टाइम फ्रेम थोड़ी हमने उनको दिया हुआ है, वो तो आता ही रहता है ना। वो तो आप हो सकता है अभी चेक करें तो अभी फिर शायद अपडेट हो गया हो। देखो टोटल कितना मुझे कल बताया था 457 थे अभी मैं 475 कुछ हुआ है 476 हाँ जी 476 तो अभी अपडेट करके साथ ना ये वाली जो चीज है ना समरी वाली जो तुमने स्टार्ट में थी करंट और एक्सपेक्टेड वाली उसमें मुझे अपडेट दोबारा भेज दो जो सबसे पहले थी ना कि ठीक है। अब देखें अब 476 बताया था, अभी मैंने फिर रिफ्रेश किया 483 हो गया। हाँ वेरी गुड ये गैप अच्छा है वैसे इसके हिसाब से नहीं ये अच्छी बात है उनको फिर बता देंगे लोग ये भी हम जगह तो करा रहे क्यों नंबर आ रहा है अच्छी बात उनको बताएंगे अब आप मुझे अपडेटेड जो है ना भेजो बस 12:30 1 बजे तक रुको उसमें अपडेट करके यही मैं बात कर रहा था ना कि मतलब हम एक टाइम फ्रेम रखें कि उनको हम बताएं कि इतने टाइम तक हमारे पास जो डेटा आ चुका है उसके हिसाब से आज हम कैसे इससे आज से 1 बजे तक हमारे पास डेटा हां हां ऐसे तो 1 बजे तक रिफ्रेश करके हम अपडेट कर देते हैं ना। तो मैं भी बस वही एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि वो जो हमने चीज़ें प्रेजेंट करते हैं ना तो वो मुझे अगर ये पावर बीआई में ही अगर मिलती जाती है ना तो वो पूरा एक प्रोसीजर डाउनलोड करना और वो सारा उससे फिर
हाँ और कौन सही सही है सही है मतलब मैक्सिमम मतलब कब तक मिल जाएगा 3 बजे के अराउंड मतलब तो उससे पहले मिल जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है अरे वो बस बता रहा था कि वो मतलब इससे वो काम करवाते हैं हमेशा तो वो तुम्हारी बन है तो उसको टाइम लगता है मतलब तकरीबन 2-2.5 घंटे तो लगेंगे जिले में ना एक इंटरव्यू है अभी जी योगेश का आपके साथ में इंशाल्लाह होपफुली 30 मिनट्स में होगा मेरे अंदर
क्या बंद हुआ है? इसके अंदर है। मैं सोच रही इसके बाद इतनी ज्यादा कब लैंप ऑफ ही है वैसे। आवाज दे रहा है उस स्टैंड बाई पे उसने रखा हुआ है ना उसको। अच्छा तो क्या बनाया जो कंपेयर करे थे आप वो में फर्स्ट डबल फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग या कौन नहीं वो पूरा नहीं हुआ अभी। कब करना है उसको मतलब कल भी हम लगे रहे हैं उसमें थोड़ा सा ना वो आ रही है। क्या एक तो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आ रहे हैं मसले ज्यादा। और दूसरा जो है और क्या है, हाँ वो जो है ना दूसरी जो चीज आ रही है वो उसमें कंफ्यूजन आ रही है ज्यादा। मदर का एजुकेशन स्टेटस और फादर का एजुकेशन स्टेटस। तो वो तो डेमोग्राफिक है ना मेन कोर आइटम्स में तो नहीं आ रही नहीं उसमें इतनी नहीं आ रही। हाँ तो हमें मतलब प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ऑटोमेट वाली चीज़ों को हम कर लें ताकि हमें कुछ पता चले ना उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। मतलब उसमें यूँ होता है ना कि अब फाइल अब खुली रही है तो उसमें मतलब चंद ही सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं बस उसको देखने में। तो वो वैसे आपको पैटर्न एक बताया है कि वो उसमें हमने उसको उर्दू साइड से किया हुआ है ना और उसमें वो क्वेश्चन नहीं है पढ़े लिखे हैं या नहीं। उससे काफी सिंपलीफाई और सिंपल हो जाता है डेटा जो है। यूँ हमें उसको ना कुछ लोगों ने डैश लगवाया है स्टूडेंट से, कुछ लोगों ने अब कुछ ने एम्प्टी छोड़ा हुआ है तो उसमें ना थोड़ा सा मिक्सअप है। उन्होंने जैसे असेस करवाया मतलब असेसमेंट कंडक्ट जैसे करवाई है। अब वो शायद टाइम कंस्ट्रेंट थी इस वजह से प्रॉपर तरीके से टीम मेंबर्स का आपस में कम्युनिकेट नहीं हुआ जो अभी जो नजर आ रहा था। डिस्कस कर लेना चाहिए मतलब मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था ना कि ये चीजें ऐसी आ रही है तो ये अब मंडे को ही एक दफा ना मॉर्निंग में स्टार्ट करने से पहले आप आके जरा 5 से 10 मिनट बैठे ना अगर मेरे पास तो आप सिर्फ एक दफा देखें कि किस तरीके से आ रही है तो थोड़ा सा हम उसको एक पॉइंट पे डिसाइड कर लें कि हमने क्या चीज कर रहे होंगे। ठीक है तो हम ना कई चीजें ऐसी आती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको हम ये करें या ये करें। अब जैसे एक बच्चे ने एज लिखी हुई है उसने एज नहीं लिखी हुई उसने डेट डाल दी हुई है आज की डेट मतलब DOI तो वो तो मिस ही होगा डेफिनेटली। तो कुछ चीजें ऐसी हैं अभी मेरे जहन में आ नहीं रही रिकॉल करते हुए तो वो आप अगर आ जाए ना थोड़ी देर के लिए मंडे को तो वो चीजें आपके सामने थोड़ी सी आ जाए आप एक दफा देख लें किस पैटर्न क्या है तो वो बस एक पेज पे हम डिसाइड कर लें कि ऐसे करना है तो फिर उस पे रख के बस स्पीड से कोशिश होगी मंडे को पूरा हो जाए। हाँ ये कर लो अच्छी बात है क्योंकि फिर बहुत सारे हम लैब पे चले जाते हैं और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और उसमें हमें एक दफा ऐसा भी आया है कि वो तो खैर जब एंड पे पहुंचेंगे तब सही क्लियर होगा। एक दफा ऐसा केस आया कि किसी ने ऊपर ना जो आईडी नहीं होती सीरियल जो स्टेप हुआ हुआ है वो 3 था उसको उसने 8 बना दिया हुआ था। अब जो जिसने एंट्री की है उसकी तो गलती नहीं थी उसने तो अब वो 2 केस आ गए 88 के या 78 जो भी था आईडी। तो ये चीजें कुछ है जो की पॉइंट्स है हमारे जो भी नेक्स्ट टाइम मतलब चीज इस तरह होगी ना उसमें ये चीज मतलब मैंने जैसे चीज माइंड में रखी है कि एक मेरा लर्निंग पॉइंट जो इस दफा से था कि जब डेटा एंट्री जब स्टार्ट हो जाए तो एक सेशन फॉर एग्जांपल लंच ब्रेक तक जो उन्होंने डेटा एंट्री की है तो हम 15 मिनट्स के लिए कनेक्ट करें आप भी हो साथ और हम बैठ के एक दफा देखें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो बताएं अपने सारे कि हमें ये ऐसी ऐसी चीजें बीच में आ रही हैं फिर हम उस पे एक सिंगल पॉइंट पे डिसाइड कर लें कि ऐसे हो रहा है तो ऐसे करना है ऐसे हो रहा है तो ऐसे करना है। अभी टीम का जो फीडबैक था वो एक ये था कि वो ये बता रहे थे कि ये जो एक्सेल शीट एक ऑनलाइन बना के शेयर हुई है ना वन ड्राइव पे
उससे उनको थोड़ा सा ये एडवांटेज हुआ है कि उनको पता था कि अब हमने आज ये करना है, कल अब हमारे ये कि हमें साइंड है फाइल, हमने ये उठानी है और ये हमने करनी है। तो उन्होंने अपना प्लान माइंड पूरा एक सेट बना लिया हुआ था कि हमने ऐसे ऐसे कर चलाना है। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव फीडबैक है। और जो उसमें वो नंबर एंटर कर लेते हैं और उससे पता लग जाता है कि नेक्स्ट टाइम हमारे इतने केस रह गए हैं, ये खत्म करके हम नेक्स्ट फाइल हमें एडवांस में मांग लेते थे कि ये हमें कंप्लीट हो जाएगा, हमें ये दे दे फाइल आज। तो ये एक अच्छा हमारा फीडबैक, ये अच्छा रहा इस दफा। हमें वो डेटा एंट्री जो फॉर्म लॉग फिल करते थे ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। वो एक तरह से यही लॉग मेंटेन ऑनलाइन ही हो रहा है ना, हमें पता चल रहा है इसने इतनी एंट्री की, इसने इतनी एंट्री की। बाकी कुछ चीजें हैं जो केयर गिवर का नंबर जो है ना, वो जो मेरे माइंड में मतलब क्लियर नहीं है। जो स्मार्ट में जो केयर गिवर्स के नंबर जो उनकी तरफ से आ रहे हैं ना, वो एक दफा मतलब जिस वक्त ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा, फिर उसके बाद उसका नंबर जो हमारे जो 208 है, उसका पूरा हमारे पास स्टेटस आना चाहिए ना कि 208 में से कितने फॉलो हुए, कितने चैलेंजेस केसेस से और सारा कुछ था। जो आए हैं 208 थे ना, उन सबको हमने किया है ना केयर गिवर्स को। ऐसे तो उस 208 का पूरा एक स्टेटस हमारे पास होना चाहिए कि इस 208 में से कितने हमारे पास केसेस आ गए और कितने हमारे पास जो रह गए। तो वो एक दफा बस मैं टीम के साथ डिस्कस करूंगा पहले, और फिर उस स्टेटस उसका आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। हमने जो फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग में मतलब जो पॉजिटिव वाले हैं उनको आपस में एक तो स्टेप मतलब मर्ज करवा लूंगा। सेकंड ये चीज आपसे बस क्लियर करनी है कि उसकी फाइल अलग करने की जरूरत है या बस सेपरेटर लगा के टॉप पे रखते हैं। नहीं, बस एक ही में कर दो, आसानी हो जाएगी, वरना मुश्किल हो जाएगा जब दो फाइलें मेंटेन करना। मतलब उसमें तो हम ट्रायल फाइल्स बनाते हैं ना, हाँ। तो फिर जो मीट कर रहे हैं ट्रायल का क्राइटेरिया, जो पॉजिटिव आए हैं उनको फिर अलग कर लेंगे ना आप। ये पूछ रहा हूँ ना कि जो फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग तो सिर्फ होनी की है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड सेटिंग को ना कंसीडर करें ना, आप फिर ट्रायल पार्टिसिपेंट्स को देखें। मतलब फर्स्ट से सेकंड सेटिंग इज नॉट
जब ट्रायल की बात करें उसमें फर्स्ट सेकंड सिटिंग नहीं है, आपने जितने ट्रायल फाइल्स बनाए ओके वो तमाम पार्टिसिपेंट जो कि ट्रायल में शामिल हो गए उनकी फाइल अलग बनेगी। उनका सारा डेटा उस फाइल में होगा। हाँ, क्योंकि बाकी सारा स्क्रीनिंग का डेटा है ना, राइट वो सारा कुछ हो रहा है उसमें। आपने ये देखना है कि पीएससी उधर से उठाया पॉजिटिव, उसके बाद उसकी बाकी असेसमेंट कराई, वो अलग फाइल, क्योंकि वो ट्रायल फाइल्स होती है। ठीक है, ऐसे तो हम बनाएंगे जो इंडिविजुअल तो वो फाइल्स 208 फाइल्स बनेगी जो अलग। जिसके तो साथ उसमें से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाएंगे। तो हमारा वो होगा ना जो मतलब सिर्फ स्क्रीनर की बेस होगा या पीएचक्यू भी पॉजिटिव है तो वो हमारा फाइल, पीएससी पॉजिटिव है अगर तो उसकी फाइल बनेगी। तो अगर वो हमें आगे प्रेजेंट है हो गया सेकंड सिटिंग में नहीं मिला तो फिर नहीं लगेगा। बस यही मैंने कंफर्म करना है कि एक्सक्लूड हो गया ना वो, अगर वो सेकंड सिटिंग में नहीं है। पीएचक्यू में पॉजिटिव आना जरूरी है, पीएचक्यू हुआ होना जरूरी है। हुआ होना जरूरी है, ठीक है, मतलब कंडक्टेड उसका डेटा होना चाहिए, ठीक है। तब सारा काम इकट्ठा किया हुआ है। ये नहीं मतलब वो जो होते हैं ना मुझसे पूछते हैं फील्ड कोऑर्डिनेटर्स वगैरह आते हैं ना तो मुझसे पूछते हैं कोई काम है तो अभी फिर उनको दे दूंगा ना मैं मंडे को, उनको बता दूंगा ये काम। हाँ, लेकिन अभी सुपरविजन में कराना बस है, क्योंकि उनको तो इस तरह के काम की सेंसिटिविटी का आइडिया नहीं होगा। आपको तो पता है कि ट्रायल फाइल्स मतलब पार्टिसिपेंट की वो तो मतलब अगर आपके पास इंडिविजुअल ना भी, वैसे तो आईडी इंडिविजुअल फाइल होनी चाहिए, जैसा हमने शाइन में बनाई है 980 उस तरह की फाइल है, लेकिन वो स्टेशनरी का एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ऐसे ही है ना। वो मैं उनसे पूछ लूंगा ना कि अगर है तो मैं उनसे कहूंगा मुझे दे दे। हाँ, वो कर लें, नहीं तो बड़ी बॉक्स फाइल में हर पार्टिसिपेंट के बाद एक सेपरेटर लगा देना, अगर वो नहीं मिलती तो आईडी। अच्छा ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। नहीं वैसे इजी तो यही होगा ना कि अगर फाइल से लगाओ। वैसे ये भी आपने अच्छा आइडिया दिया है कि अगर हम बॉक्स फाइल यूज करें और सेपरेटर लगा लें। सेपरेटर चाहिए होगा इसके लिए। इन एनी केस कुछ ना कुछ है। हाँ, लेकिन ये हमें चाहिए होगा।
जॉन ने आना GHS टीम है इसको आपने किया हाँ क्या उसकी स्पीड स्लो है 4444 था ना उसकी जगह बस 5555 है 1 1 2 3 टेट्रा 5 ये पता नहीं किसने चेंज किया और कब चेंज किया है ये मोस्ट प्रोबेबली वो बकर का ये वो बकर का स्टाइल है उसमें वो फैल जाता है ना ड्रग्स वगैरह सारे वो बहुत ज्यादा फैल जाता है तो फिर वो जब रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पे फिर वो
ये देखो कैसा क्या पहली रिपोर्ट में क्या कहा जाता है कि हैट का स्कोर मीन इतना है, डिप्रेशन पे इतना है और PHQ-9 पे इतना है और पॉजिटिव इतने, नेगेटिव इतने, पॉजिटिव इतने, नेगेटिव इतने। हाँ अच्छा है, सही है। तो पेज 1 पे देखें, ये रियल टाइम है। ये रियल टाइम है। टोटल नंबर अभी तक जितने सबमिट हुए मेल फीमेल के डिप्रेशन इंप्रेसिव। ये भी रिफ्रेश करें, शायद चेंज हो जाए नंबर। अब एक बार ये ना मैं रिफ्रेश करूंगा इसको। करें रिफ्रेश करें, कहाँ पे आएगा बटन? ऊपर रिफ्रेश पे, ठीक है। रिफ्रेश हो रहा है। वेरिंग क्रिएटिंग कनेक्शन, वेटिंग फॉर GIST प्रोजेक्ट लॉन्च के 87 हो गया। सारा अपडेट हो गया। परफेक्ट, ये बहुत अच्छा है। रियल टाइम पे ये पता है हम लाइव लोगों को दिखा सकते हैं। ये इसीलिए वैसे मैं बना रहा था कि अगर दिखा रहे तो हम दिखा सकते हैं। और जबरदस्त चीज़ है हाशिम, मतलब ये मतलब सर ही पूछ रहा था कि मतलब कोई इसका लाइव कोई वो तरीका हो सकता है। तो एक ये पावर BI था, मतलब मेरे इसका वो थी एक कोर्स उन्होंने बताया था, ये जो नर्सिंग कॉलेज के लिए ना, तो उन्होंने एक कोर्स मैंडेटरी किया हुआ था। तो उसके अंदर उन्होंने ये पावर BI का बताया था।
Thank you very much, sir. Or would you like to recommend any other general practitioner or and law and information provider after your I think it should be evidence motion before we say that information will not be sent to you in terms thank you very much, sir, for your precious time and for willingness in showing your presence for the day. Thank you very much for your valuable feedback and definitely आपने इसकी पूरा highlight किया है। जो भी चैलेंज है या नहीं है willing to inspire to have interest not only having willing to कैसा हो गया ठीक हो गया अच्छा हो गया था अच्छी फीडबैक इस तरह की चीजें ना हाईलाइट करेंगे डॉक्टर साहब को वैसे ही पता है कि वो हमेशा ही होता था कि भाई आपके पास जो पेशेंट आते हैं ऐसे किसी जो हमने रेफर करने होते हैं ना उनका क्या सिस्टम है एक तो वो ये कहती है कि रेफरल हमें को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है ना क्योंकि जब आपके पेशेंट आपके पास आता है आप उसको डायग्नोज करते तो आप ओन करते हैं उसको ना और जब आप देखते हैं कि भाई उसको मैंने कहाँ रेफर करना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे पाथवे प्रोवाइड करते हैं तो ये वो कहते हैं कि ये चैलेंज मुझे हमेशा से ही रहा है लेकिन उसके नाम से तो वो बाबा डॉक्टर जफर मिर्जा का नाम मेरा क्लास भी इन्होंने ली या मैं कहती स्पेशली डॉक्टर जफर मिर्जा डॉक्टर ये डॉक्टर वो डॉक्टर उस्मान डॉक्टर वो आईडी नहीं हो हमारी सेक्रेटरी दो नंबर उठाएंगे बस हाँ ऐसे ही ना और सोसाइटी जो मतलब ये कि आप लोग चीजें बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चली और पहले ही सेमिनार्स में पता था कि हमने कहाँ जाना है तो ये बहुत अच्छी थी आप लोगों के मतलब चीजों को चलाने के लिहाज से अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कि मैं पहले मतलब अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतने पेशेंट्स को कभी भी नहीं हम रेफर ही करते थे लेकिन अब ऐसा है कि साइड को एजुकेट पेशेंट्स को हम लो डोज एसआरएस स्टार्ट कराते हैं तो फॉलो अप का इनको था कि आप फॉलो अप में इसलिए हाथ से पेशेंट आते नहीं है ना तो उसका ये रीजन है कि वो हमें एज जनरल प्रैक्टिशनर ही समझते हैं उनके जहनों में भी ये चीज़ नहीं आएगी कि दिमागी सेहत से मुताबिक चीज़ें के पास इनके पास जाना चाहिए ना तो या तो हमारी मेडिसिन बहुत कमर्शियली खाते हैं या खाते ही नहीं है किसी और के पास चले जाते हैं तो फॉलो अप के वो लिहाज से कह रहे थे कि ये चैलेंज हमें आता है
ये चीज थी। और दूसरा ये कि भाई वही आपके पीएम प्लस और ईज जो है वो हमें जल्दी से कराएं ताकि हम जो है ना पेशेंट को इनिशियली जो है वो थेरेपी दो डोज इस तरह कर सके और मतलब बाकी सब ये इस तरह की कोई ना कोई छोटी मोटी चीजें थी जो उसमें लिखी है कि अच्छा और